तो आज हम ये देखने वाले हैं माइटोसिस। डियर स्टूडेंट्स, माइटोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें वन सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। माइटोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कि माइटोसिस एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। कि जो नए डॉटर सेल बनते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम होते हैं एज इन द पेरेंट सेल के जितने पेरेंट सेल में होंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डबल ड्यूरिंग इंटरफेज। बच्चों, इंटरफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है। टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर फॉर्म, इससे क्रोमोसोम के टू सेट्स बन जाते हैं। ड्यूरिंग माइटोसिस व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स द टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द टू डॉटर न्यूक्लियाई। और जब माइटोसिस में सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो जो दो सेट्स बने थे क्रोमोसोम के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में। क्लियर। और बच्चों, न्यूक्लियस की जो डिवीजन है, न्यूक्लियस की डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्लियर। कैरियो मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और इसकी फोर फेजेज हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। क्लियर। बच्चों, न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, a shallow groove arises in the middle of the cytoplasm, which deepens further and divides the cell into two daughter cells. कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक डिप्रेशन सा अराइज होता है और वो वाला जो डिप्रेशन है आहिस्ता आहिस्ता डीप होता रहता है और यहाँ तक कि वो सेल टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ईच हैविंग अ न्यूक्लियस। और बच्चों, माइटोसिस को एक एनिमेशन से देखते हैं। In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also,
the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the process of separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei.